पे डालोगे? हाँ तुम्हें दे दूंगी मैं, चिंता मत करो। Okay, so we are talking about the Schrodinger wave equation. Before going to the Schrodinger wave equation, I was telling about the psi, right? I am telling about the psi. This is the mathematical function or wave function भी इसको बोलते हैं. This is representing the amplitude of the wave at various points surrounding the nucleus, and both the if we are talking about the some of the properties of the electron, so you can compare the equation of the standing wave with the electronic wave, right? So your in one condition your wave is in a standing position, in second thing that electron is moving, right? So this equation is applicable to the stationary wave and is also applicable to the electronic wave, right? For stationary where this is the equation, psi is equal to a sine 2 pi x divided by n lambda or lambda, right? So psi is your amplitude, a is constant, x is your displacement, and lambda is the wavelength of the electronic wave, right? Means this is your wave condition, and your wave is going down then going up. So this you can say this is the sum of the points, so this point is x. ये तुम्हारा जो पॉइंट है ये x, ठीक है. So both the electronic wave and the standing wave having the one thing common, that is the electron move under the constraint of the attraction of the nucleus and stretch string fixed at its end, right? So this is also under the constraint. Now very important to derive the linear wave equation. How to derive this, right? So Schrodinger he compared electron wave to stationary wave. Stationary wave is of a stretched string at a 2 point, means these 2 points are fixed, like in this way. These are the 2 points, and your electronic wave is moving like in this way, right? So you can say, means this is sum of the point, this is the displacement x, right? So your electron is moving under the constraint of attraction of nucleus. So this is moving under the constraint of the attraction of the nucleus, and also the constraint of the your string also, right? So you can say, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, your amplitude psi wave function that is equal to a sin 2 pi x over lambda. So यहाँ हमने x लिया है, तो amplitude in x direction, जो तुम्हारा amplitude है that is in x direction, right? And this equation which govern the standing wave, right? स्टैंडिंग वेव के लिए हम ये एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, राइट? सेकेंड थिंग,
We are using the de Broglie expression also with this one, right? de Broglie expression तुम्हारा क्या था? उसमें उसने बताया था दैट इज हैविंग ए पार्टिकल एज वेल एज अ वेव नेचर. देयरफॉर डी ब्रोगली का जो एक्सप्रेशन था दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. ठीक है. नाउ वी आर डबल डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. We are double differentiating this equation. Now we having the d psi is equal to, on first differentiation, a 2 pi over lambda cos 2 pi x over lambda. बेटा ठीक है. Now the second differentiation, d psi over dx square is equal to a 2 pi over lambda into 2 pi over lambda. Now on double differentiating, minus sine 2 pi x over lambda. Now coming minus 4 pi square over lambda square into a sine 2 pi x over lambda. Okay. Now this value is equal to the psi, right? So d del square or dx square is equal to minus 4 pi square over lambda square psi. So this is the expression of electron wave propagating in x direction, right? बेटा ठीक है. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now we have to insert this de Broglie relation in this equation. Before going to that one, I will tell something else. बेटा इरेज कर दो इसको. Shall I erase it? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, when your electron wave is propagating in all the three directions, then incorporate the psi over dx square x y z, right? So now we got this equation, dx square plus 4 pi square or lambda square psi is equal to 0, because the term of the this one we have taken on the left hand side, right? Or if your electronic wave in three dimensional, then we are getting this equation over del x square plus y square plus z square plus 4 pi square over lambda square psi is equal to 0, right? So this term, this whole, this differentiation is called the del square. Del square is the Laplacian operator. So we can write this equation in this way. This is the Schrodinger wave equation. मैम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है. जैसे I'll कि explain. x में. एक मिनट. हाँ अब बोलो.
मैम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने करा है सारा। नहीं, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किया क्योंकि थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किया, राइट। लेकिन हमें तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट, यदि तुम इसको अपर में, यदि मैं ए साइन 2 पाई x/λ की जगह पे मैं एक्स भी लेके चलती, वाई भी लेके चलती, जेड भी लेके चलती, तो तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट। तो जब भी हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालते हैं तो सिंपल सा एक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं, राइट। यस मैम। ठीक है। ओके, तो हमने एक तो बोला था कि डी ब्रोगली इक्वेशन का मैंने बताया था सेकंड में, that lambda is equal to h over mv, this will we will incorporate in this equation, and also to find the energy, हमें एनर्जी जब निकालनी होगी तो टोटल एनर्जी ऑफ द whole system that is equal to the kinetic energy plus potential energy, right. So this both the term we will incorporate in this equation also. First this one, right, by squaring the दिस इक्वेशन, यदि हम इसको स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा। हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार लैप्लासियन ऑपरेटर का जो आपने सिंबल बना रखा है वो एक बार थोड़ा सा बड़ा करके बना। ये डेल डेल का जो इन्वर्टिव जो डेल होता है ना वो है ये, ठीक है। और उसके ऊपर स्क्वायर है ना? स्क्वायर है वो। क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो इसलिए इसको डेल स्क्वायर से ही दिखाते हैं, दैट इज द लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है बेटा। ओके मैम। Okay, now we are taking the square of the both side on in the de Broglie equation. Lambda square is equal to h square over m square v square, right. I am taking the inverted reciprocal areas का, ठीक है। 1 over lambda square is equal to m square v square over h square, right. ये हमारी equation आ गई है। Now I am inserting this 1 by lambda square value in this equation. So now I am getting del square psi plus 4 pi square psi m square v square divided by h square equal to 0, right. Now I have written for the third equation for this one, total energy of the system is equal to kinetic energy plus potential energy. So you all know that energy is equal to half mv square plus potential energy you can define by v, right. So E minus v you can say that is equal to half mv square, right. Clear beta. Now I am inserting this equation, half mv square is equal to E minus v, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, del square psi plus 4 pi square psi m square to E minus v divided by m h square is equal to 0. M cross, right. ये नेक्स्ट पेज पे लिख दो बेटा। 1 minute, ma'am. Shall I go to next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now the final equation is del square psi plus 8 pi square psi over h square
E minus V M. That is, you can say that is equal to or less than 0. This is for the standing wave or electron. Okay. And this equation, you can say this is the time independent wave equation. ठीक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम हमने इनकॉर्पोरेट नहीं कर रखा है, तो इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट है। कई बार क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन बताओ कौन सी है, राइट। एंड व्हाट इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर an electron in hydrogen atom, and tell what are the terms involved. इसमें जितने भी टर्म्स है सब बताओ, और हाइड्रोजन एटम के लिए भी लिखने को पूछ सकते हैं या सिंपल भी लिखने को पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि हाइड्रोजन एटम की टर्म में पूछते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए पूछते हैं, देन यू कैन राइट इन दिस वे। यहाँ पे देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी को जब हाइड्रोजन की टर्म में हमें निकालना होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था हाइड्रोजन एटम के लिए देखा था, तो हम इस वे में लिख सकते हैं। इसके आगे साई है और 0 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जेड की वैल्यू जो होती है 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। बेटा सही लिखा है, समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? यस मैम। v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर आर, तुम पढ़ते हुए आए हो, राइट। ये पढ़ा है ना बेटा आपने? यस मैम, पढ़ा है। अब इसके अंदर सारा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। साई क्या है? तुम्हारा एम्पलीट्यूड फंक्शन है, ऑपरेटिंग थ्री डायरेक्शनल, and m is the mass of the electron, E is the total energy, h is the Planck constant, r is the distance of the electron from the nucleus, ठीक है। Second question, sometimes they can ask what is the Schrodinger wave equation, ऐसे simply भी पूछ सकते हैं। wave equation और व्हाट इज द साई, साई के लिए भी पूछ सकते हैं। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज साई एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। मैम सिग्निफिकेंस तो साई स्क्वायर की होती है ना? नहीं, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, साई की भी बताओ। ओके मैम। So you can write in this way. First one, it has only mathematical significance, ठीक है, फिजिकल नहीं है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है इसका। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, right, because there is no such property that can be measured, right। ये ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जो हम मेजर कर सकते हैं, which is attached to the electronic wave, that's why there is no physical significance of psi, right। physical significance क्यों नहीं है? because we can't measure this quantity, ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं।
ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, जस्ट बता सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव intensity is directly proportional to the psi square, not depending on the psi, or you can say that is directly proportional to the number of photons. Means that is telling about the density, right? So psi square gives the probability of finding the electron in the space, right? Or you can say that psi square is telling about the density, that is directly proportional to the density. कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका यदि डेंसिटी कोई पूछता है तो you can tell about the psi square, right? So here psi square does have the physical significance but psi doesn't have, right? Clear है बेटा? Yes, ma'am. And third step, you can write, say like, psi will always be positive and real. ठीक है, psi जो है तुम्हारा always भी positive quantity है और real है. And if it has any negative value, then psi into psi is equal to psi square. तो positive हो जाएगा, right? तो यदि psi will always be positive and real, if it has negative value, then psi into psi giving the psi square. And if the imaginary value, यदि तुम imaginary value की फॉर्म में ले सकते हो इसको, साई इंटू साइज का स्टार, जैसे तुम पहले इसको तुमने जो क्वांटम वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो, राइट, साई साई स्टार इज इक्वल टू कितना आएगा, वो साई स्क्वायर ही आएगा. आई की यदि कई बार क्या करते हैं इसके साथ में आई वैल्यू लगा देते हैं, राइट, सो दैट विल बी इक्वल टू √-1. So simply you can say psi square dV. This it gives the probability of finding the electron in the small volume dV, राइट. जब उनका डबल डिफरेंशिएशन करके कई बार पूछ लेते हैं तो उसके अंदर साई स्क्वायर dV का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल वॉल्यूम dV. ठीक है, तो ये कई बार क्या बोलते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि साई और साई स्क्वायर के बीच में डिफरेंस बताओ, या व्हाट इज द साई एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. तो किसी भी वे में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बेटा क्लियर है यहाँ तक? मैम आपने ये नीचे क्या लिखा है मैम? मैंने तो जस्ट बताया है कि जो साई जो है पॉजिटिव नेगेटिव रियल कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो साई स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही रहता है ऑलवेज, राइट. साई स्क्वायर पॉजिटिव कैसे रहता है, यदि साई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस ही हो जाएगा, तो दैट इज ऑलवेज टेलिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट. कई बार क्या करते हैं साई के साथ में साई स्टार भी लगा होता है, दैट साई मीन्स इमेजिनरी साई, राइट. सो दैट साई यू आर तुमने कभी मैथमेटिक्स के अंदर लिखा होगा आई आई एक फैक्टर लिख के साई लिख देते हैं, राइट. तो आई की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू द √-1. हम डिटेल में मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिक्स में शायद वो तुम्हें पढ़ाएंगे मैम वगैरह. चल रही है ना तुम्हारी मैथमेटिक्स, चल रही है ना साथ साथ, तो तुम्हारे वहां पे डिटेल में आ जाएगा. ठीक है, अब ना एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, मैं आगे कर रही हूँ इसको, ठीक है, हटा दूं? यस मैम. यस मैम. Other question is, sometime they are asking how Schrodinger wave equation is an eigen function. आइगन फंक्शन कैसे है, राइट. आइगन आइगन जो एक वर्ड है ना, जो आइगन जो है, दिस इज वन ऑफ द जर्मन वर्ड, राइट. आइगन जहां पे भी आ जाता है, दिस इज अ जर्मन वर्ड. इट्स मीनिंग appropriate, acceptable, characteristic significance. ये इसका मीनिंग है आइगन का, ठीक है. सो आइगन मीन्स विच फॉलो द बाउंड्री कंडीशन.
यदि कोई फंक्शन है दैट इज ओबेइंग द बाउंड्री कंडीशन, दैट इज अप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो दैट इज बिहेविंग लाइक ए आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन के जैसे बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जर्मन वर्ड था, इसका मीनिंग यही होता था, तो इसलिए इसको यहाँ पे ये यूज कर लिया गया, ठीक है। सो द वैल्यू, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम इस टाइम पे मैम हमारी मैथ्स क्लास भी है अभी 1:30 पे। कितने बजे? तुमने तो बोला 2:30 से होता है ना तुम्हारी क्लास। नो नो मैम मैम, आज 12:30 पे है। तो तुमने मुझे गलत बोला। नो मैम, गलत तो नहीं बोला। क्योंकि मैंने इस चक्कर में जो है तुम्हें इसलिए लेट स्टार्ट करवा ली थी क्लास। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज 12:30